So, good evening, all. It's my absolute pleasure, and I would like to start by expressing my heartfelt gratitude to our esteemed guest of honor for gracing us with his presence. I would also like to extend a warm thank you to our committed moderators from GSTS and GSTS convener Dr. Manish Karamwar, sir. Your dedication to facilitating these discussions and fostering an environment of respect and curiosity is truly commendable. I, Thakur Ravi Pratap Chauhan from STEAM Department of Buddhist Studies, University of Delhi, is going to present the topic on the historical journey and present state of Buddhism in India and the modern world. Before starting the talk, I'd also like to share some of my experience and why I joined Buddhist studies in masters. I come from Bihar, and Bihar is a land of religion, of many religions, like Brahmanism, Jainism, Buddhism, and Sikhism. And whenever I fascinated about I philosophy or compassion, love, and kindness, I was very much fascinated with Buddhism and its spirituality and Buddhist philosophy. And in the time of bitterness, Buddha's teaching is very much relevant whether we talk about compassion, kindness, or love. I think Buddhist philosophy is one of the ingredients that the world needs now. So I'm going to present Buddhism and its relevance in today's world. So one of my first objective is development of Buddhism, origin, growth, and eventual decline. Contemporary state of Buddhism in India, with special reference to Bodh Gaya and Dharmashala, spread the Buddhism to the various parts of the world, and influence of Buddhism on various aspects of contemporary world. So, starting with the starting with my first objective, the introduction to Buddhist Buddhism. It was the civilized part of the India was divided into 16 realms, 8 republic, and 8 kingdom. And the little Sakya Republic in modern Nepal was ruled by Kosal, and Sakya belonged to Kshatriya solar race and called themselves Rajas. And around mid 7th century, सुधोधन जो कि बुद्ध के पिता थे वो साक्य रिपब्लिक के राजा थे और उन्होंने उन्होंने उस टाइम पे साक्य रिपब्लिक को रूल किया और उनकी माँ महामाया जो उस वक्त अपने पिता के घर देवदा जा रही थी उसी बीच उन्होंने लुम्बिनी के जंगल में बुद्ध को गौतम सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया जन्म देने के बाद ही 16 साल की उम्र में बुद्ध की जो सिद्धार्थ की जो शादी है वो यशोधरा से हो जाती है और उनका एक बेटा होता है जिनका उन्होंने नाम रखा राहुल जिसका मतलब होता है एक ऑब्स्टेकल एक कठिनाई and at the age of 29 he left his house at midnight and this is known as the great renunciation in various Buddhist texts and literature और ये एक सिंबल भी है या एक सिंबलाइज भी करता है कि if you want to attain the enlightenment you have to sacrifice certain things in order to shake off your desires and trishna and this also entails an example for the later monks and nuns. This was introduction. Later on, the historical development of Buddhism. Now we will go through its origin, growth, and decline. When we talk about growth, people from other countries are often intrigued by the phenomena that originating in India, Buddhism as a humanist force profoundly affected religion and moral ideas and its time and acted as a powerful catalytic factor in transforming the existing social condition. Buddhism is a religion of kindness, humanity, and equality. I have attempted to evaluate the origin and nature of Buddhism as reflected in Pali Vinaya and Sutta Pitaka. When we move from Vedic period into the age of Buddha's, agriculture had made a steady progress, and trade routes were established, and the caravan traffic made its appearance. But the Varna system was prevalent during the Buddha's time, and the people of lower Varnas were poor. The people generally poor were bound to become more and more pessimistic and weary of finding the correct path to happiness. This created a vacuum which favored a new faith called Buddhism. And we cannot dismiss the fact that Buddha's Siddhartha Gautam was over an experience of worldly ill cannot be dismissed lightly. As an open-minded young man, he must have been influenced by most of the
ills and problem of during that time. Siddharth Gautam's own experience led him to leave his house and later attained enlightenment after 6 years of his leaving the house. During the first and second century after the nirvana of Buddhism was hardly distinguished from other ascetic movement. It was evident that in Mauryan period, Buddhism emerged as a distinct religion. Ashoka's patronage contributed to the spread of Buddhism not only within the empire but also to distant land. Buddha's teaching and Buddha's edict, whether it is killing of animals, Ashoka banned it, reflecting the respecting elder, of duty of layperson. All these things are mentioned in Ashoka's pillar edict. Even अशोका ने एक पोस्ट बनाया था धर्म महामाता करके, जिनका काम था कि समाज में उन सबको चीजों को रेगुलेट करना, जिससे जो है असामाजिकता न फैले, जिससे कि है सारे धर्मों का सम्मान हो और सब अपने मर्जी के मुताबिक उसको फॉलो कर सके. The Fourth Council, conducted between 483 to 65 AD, also acted as a catalytic factor in spread of Buddhism and compilation of various Buddhist literature. और जो चारों काउंसिल है उसका रिजल्ट जो था वो भी काफी मदद किया बुद्धिज्म को हेल्प करने में, जैसे कि विनय पिटक और सूत्र पिटक का कंपाइलेशन और बाद में फिर अभिधम पिटक का कंपाइलेशन अशोका के टाइम पे, जिससे कि बुद्धिज्म got spread into various parts of the world, not only in India but outside India. Patronage by Ajatasattu, Ashoka, and Kanishka led to growth of Buddhism. Missionaries to other parts of the world also led to the spread of Buddhism. Gupta and Harshpal dynasty kept the torch burning, while during this period we can also experience the decline of Buddhism because Brahminical Hinduism was also on its peak. Construction of Mahavihar like Nalanda, Udanpuri and Sompuri, it also helped in growth and spread of Buddhism, and later with the help of Indian people there can understand the religion. Later Kanishka, we can also we have to, if you're talking about the growth, Kanishka's reign in the history of Buddhism, Indo-Greek school of Buddhist art achieved this greatest development with the advent of Gupta and Buddhism to a new era of art and architecture, followed by Harsh dynasty, constructed a large number of viharas. Till 12th century, all this institution and Mahavihar helped in the spread of Buddhism until the attack of foreign invader, which acted as a final blow to the already declining Buddhism. When we talk about decline of Buddhism, in order to understand the decline of Buddhism, we have to consider the information on subject of Huansang description. The few reasons for decline of Buddhism were moral and ethical degeneracy of Sangha, issue of animosity of Brahmins, question of persecution of Hindu Brahminical kings, Arab and Turk attack, sectarian and the rise of Mahayana and Vajrayana, role of Bhakti and Sufi movement, fall of dynasties and loss of patronage. When we talk about moral and ethical degeneracy, R.C. Mitra supports and says that moral and ethical degeneracy was one of the main reasons because the Sangha became corrupt, monks and nuns did not follow certain rules, and various important ceremonies were not conducted. And we get this proof also because in Third Council, Ashoka dismissed 60,000 bogus monks, which he considered that they were not monks but thieves and dacoits. This shows that the level of corruption in Sangha. G. Verardi and L.M. Joshi supports that the animosity of Brahmins was led to the decline of Buddhism because it is said that in various Buddhist literature like Vidyavadan and Ashokvadan, various stories are mentioned where disliking of Buddhism by Hindu Brahmanism is also shown, and it shows that how it led to the destruction of their monasteries, viharas, and eventually decline of Buddhism. When we talk about the question of persecution of kings like Sashank and Pushpamitra Shunga, many stories come along.
एक जो बहुत फेमस स्टोरी वो है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने कहा था कि जो भी एक भी मॉन्क का सर लाएगा उसको 100 सोने के दिनार दिए जाएंगे। शशांक के लिए ये कहा जाता है कि ही वॉज द वन ऑफ द मेन प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज उन्होंने बोधि ट्री को जड़ से कटवा दिया था। और जब लोगों ने कहा कि इसकी जड़ें बाद में भी फैल सकती हैं और एक नया पेड़ बन सकता है इस जगह, तो उन्होंने उस पेड़ को भी जलवा दिया था। So this proves that during that time, the persecution of kings was also on its peak. When we talk about Arab and Turk attack, V.A. Smith, H.P. Sastry, H.M. Eliot, Henry Cousin, B.R. Ambedkar, and else suggested that Islamic attack were the primarily reason for the decline of Buddhism. इनका कहना है कि अरब और तुर्क अटैक की वजह से ही बुद्धिस्ट महाविहारों का डिस्ट्रक्शन हुआ, उनकी लाइब्रेरीज जलाई गई, जिसके और जो मॉन्क्स को मारा गया, जिससे मॉन्क्स and nuns and various other ordained and experienced monks, they fled to various other parts like Tibet and Nepal. When we talk about the since after that 12th century to 19th century, Buddhism was virtually declined from various parts of the world. But after few in 19th and 20th century, we see a revival in India because of certain reasons, and that reason goes to Bodh Gaya and Dharmashala and its influence. The collapse of Pal dynasty in 12th century led to another setback from Buddhists, which did not recover. Buddhist presence in India has become negligible. However, in 19th century, places in India like Bodh Gaya and Dharmashala, which were visited by then various other monks, helped in revival of Buddhism, and some of the most important sites, which now we know as Bodhi Temple, which become famous sites for the follower of Buddhism and those who have faith in Buddhism. Bodh Gaya, which is located in Uttarakhand, and when we talk about Bodh Gaya, one of the famous pilgrimages in the world is Mahabodhi Temple, and various objects of interest are Bodhi tree, Vajrasan, Sujata Kuti, Uruvela forest, and various temple and monasteries. And Bodh Gaya is also getting funds and various help and patronage from other parts of the world, and various monasteries of that countries are also being made in Bodh Gaya. One of the names which always comes when we talk about restoring Buddhist pilgrimage site is Anagarika Dharmapala, who was a monk from Sri Lanka, uh, who came in India around 22 in 22 January 1891. He visited Bodh Gaya and he was shocked to see the condition. वहां पे एक फेमस स्टोरी ये है कि 17 और 18 शताब्दी में एक महंत ने उस महाबोधि टेम्पल के एरिया को, उन्होंने अपने ब्राह्मणिकल हिंदू जो रिलीजन और उनके जो रिचुअल्स होते हैं उनको वहां पे कंडक्ट कर रहे थे, और एक तरह से वो हिंदुइज्म का एक टेम्पल बन गया था वहां पे, जिसको देख के नायगरा को बहुत खराब लगा। और उन्होंने जब फर्स्ट फ्लोर पे जापान से दी गई हुई एक बुद्ध की मूर्ति को जब वहां पे उन्होंने इंस्टॉल करने की कोशिश की तो उनको नहीं किया गया, और बाद में फिर अनागिरकार ने और महंत ने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लीगल बैटल्स करी, और फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम टिल 1949 the legal battle went on, and after getting independence and after 2 years it was transferred to a management committee, and which later came to be known as Bodh Gaya Management Act. Then Anagika created a Mahabodhi Society in Sri Lanka in 1891, which headquarter is now in Kolkata, which जिनका काम है कि अब जो certain sites हैं उनको वो डॉक्यूमेंट करते हैं, और वहां पे वो प्रॉपर इंश्योर करते हैं कि उसको जो है एक साइट का दर्जा दिया जाए बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लेकर। दूसरा जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड करता है अभी बुद्धिज्म के रिवाइवल में वो है धर्मशाला। इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, and the objects of interest are various complex monasteries institutes such as Namgyal Monastery, Gyuto Monastery, Norbulinka Institute, and Nechung Monastery. Buddhism in Himachal Pradesh, state of India, has been a long and recorded practice. The spread of Buddhism in the region has occurred intermediately throughout the history. From the time of Ashoka, Buddhism was propagated here. Talking about the contemporary scenario, after the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso,
who escaped from Tibet with his followers in 1959. He came to take refuge in Himachal Pradesh, Dharamshala in India, and focus on Tibetan Buddhism spread further. The Dalai Lama founded Dharamshala in Himachal Pradesh as an ideal place to establish his capital in exile and called Little Lhasa or Dasa. इन्होंने इसको लाशा या दहसा कहा है. दहसा डीएच धर्मशाला का पहला दो वर्ड है और लास्ट का लाशा का एएसएच है, जो इनको इनका एक रेसिडेंशियल इनको अभी ऑफिशियली अभी इनका रेसिडेंशियल एड्रेस नॉमनिका इंस्टीट्यूट में है. Various temple and monasteries which were also later constructed in Dharamshala. And now, one of the most important question which comes into everybody's mind is that since Buddha's thought and gave so many teachings, philosophy, and so now the question arises how it is relevant today and today's world, and Buddhist philosophy and other practices are relevant in contemporary world. So in 20th century, a politically and active form of Buddhism called engaged Buddhism come into being and become a large and powerful movement throughout Buddhist Asia, and it became a path of a psychological and practical liberation of oppressed people. Today's contemporary Buddhism and its teaching and philosophy, when applied on society, it took a form of engaged Buddhism. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज engaged Buddhism? तो engaged Buddhism है a contemporary form of Buddhism that engages actively yet non-violently with the social, economical, political, and ecological problem of the society, whether it's on a day-to-day basis or on a national level. So अब हम क्या करेंगे, वेरियस एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे कि बुद्धिज्म का जो फिलोसफी या टीचिंग्स रहा है वो आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में, चाहे वो वॉर एंड पीस हो, इकोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो या फिलोसफिकल लेवल पे कैसे रिलेवेंट है और कैसे इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने या बुद्धिस्ट फिलोसफी ने कैसे समाज में विभिन्न विभिन्न स्तरों पे उन्होंने अपना योगदान दिया है. और ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, ये 20th सेंचुरी 1943 से 1926 से लेकर 20th सेंचुरी को फॉलो करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स रिलेवेंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड. So starting from I will start with the war and peace, and I will talk about various countries. This engagement is not a separate from the Buddhist philosophy, but it's very much an expression of it. When we talk about philosophy, तो बुद्धा ने फिलोसफी दी कर्म का, कैजुअलिटी का, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जिसको हम प्रतिपद समुत्पाद के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल इम्पर्मानेंस का दिया, इंटरडिपेंडेंस का दिया, फोर नोबल ट्रूथ, एट फोल्ड पाथ. तो हम अब जानेंगे कैसे इतने सारे जो बुद्धा के जो टीचिंग्स थे वो कैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स या फॉलोअर्स या जो उनको फेथ को मानते हैं कैसे उन्होंने आज कंटेम्पररी वर्ल्ड में उसको रेलेवेंट बनाया है, बुद्धा की टीचिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया है वेरियस प्रॉब्लम्स पे, चाहे वो वॉर का हो, चाहे वो इकोलॉजी का हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना बनाना हो, रोड ही क्यों ना कंस्ट्रक्शन हो, कैसे उन्होंने फॉलो किया. So first we talk about spirituality. Contemporary Buddhists are very much engaged in spiritual practices. For example, one must use non-violent means to reach that end. One must begin by developing one's own inner peacefulness in order to be capable of bringing peace to society. It includes self and others, spiritual practices, inter-religious friendliness, and incommunal spirit. When we found, और ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये हम डायमंड सूत्रा में भी फाइंड करते हैं, जो कि बेस्ड है इंटरडिपेंडेंस एंड नो सेल्फ टीचिंग पे. नो सेल्फ का मतलब है अनात्मा, आत्मा का न होना. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बुद्धा ने बहुत सारे मंत्र दिए, जैसे कि अमिताभ मंत्र, जिसको हम कह सकते हैं ओम अमी देव ह्रय, जिसका मतलब होता है आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प यू. दूसरा मंत्र है अवलोकितेश्वरा मंत्र का, जिसका मतलब होता है ओम मणि पद्मे हम इससे का मतलब होता है कि वी आर आस्किंग फॉर द विजडम. तीसरा एक मंत्र है ग्रीन तारा मंत्र, जिसको हम कहते हैं ओम तारे तुतारे तूरे स्वाहा, जिसका मतलब होता है प्लीज गिव अस strength to battle from emotional, social, and psychological problems. Now, when we talk about war and peace, the one of the most famous and controversial incident comes from Tibet. In 1949, China invaded Tibet and annexed the country.
And when the people were very much in chaos, they were frustrated psychologically and mentally, and people also took the path of violence. Buddha, Dalai Lama advocated for non-violence, and he said that instead of performing violence, how they are behaving, if we will behave in the same way, then there will be no difference between them and us. So he gave a policy of 5 piece plan, जिसमें कि उन्होंने काफी सारी चीजें इंक्लूड करी कि हमें नॉन वायलेंट नहीं करना है, हमें अपने तिब्बत के कल्चर को बचाना है, हमें चाइना की माइग्रेशन पॉलिसी को नाकाम करना है, हमें उनके इन्वायरमेंट को होते हुए भी उन्हें बचाना है. One of the example was how when the military came to fight, the people surrendered, and instead of fighting from them, उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने उनसे भाईचारे की बात की और कई सारे सोल्जर्स को उन्होंने वापस घर लौटाए. Contemporary Buddhism has also turned the attention to war on Tibet, but also on various other countries. For example, like Vietnam, struggle movement was happening during 1963 and 1966, and lots of violence and killing was being done. तब वहां पे बुद्धिस्ट ने उनको फाइट बैक करने के बजाय उन्होंने थर्ड वे करके एक तरीका निकाला और उन्होंने कहा कि ना हम नॉर्थ का सपोर्ट करते हैं, ना साउथ का, ना ही कैपिटलिस्ट का और ना ही कम्युनिस्ट का. वी विल सपोर्ट द थर्ड वे, एंड दैट इज कि हम वी आर अगेंस्ट नो वन and we will fight with no one. And there was a conflict between North and South during the war in Vietnam. So the Unified Buddhist Church of Vietnam became the most important organization and voice of anti-war movement. The number of movement called themselves Third Way. And Thich Nhat Hanh, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट वहाँ के बहुत फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने एक बुक लिखी द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, और उनमें उन्होंने काफी सारी फिलोसफीज बुद्धास की कनेक्ट करा डे टू डे प्रॉब्लम से और उनका सोल्यूशन निकाला. उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया कि डू नॉट शूट योर ब्रदर्स, एंड विच बिकम लेटर ऑन बिकम अ पॉपुलर सॉन्ग. और जितने सोल्जर्स जो लड़ने आते थे उनसे ये बिल्कुल सरेंडर कर लेते थे, और फिर बाद में उनसे भाईचारे की बात करके उन्हें समझाकर और उन्हें वापस उन्हें अपने घर भेज देते थे. जो मेरे स्क्रीन पे एक पिक्चर है वो एक रियल पिक्चर है, और वहां के एक मॉन्क थे जिनका नाम था थिक क्वांग डक. उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने मूवमेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए बुद्धिस्ट हैव सिंस एंशिएंट टाइम्स बुद्धिस्ट हैव आल्सो यूज्ड अ मेथड कॉल्ड सेल्फ इमोलेशन, जिसको कई लोग सुसाइड या क्राइम भी कहते हैं. लेकिन बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा रियली में अवेकेंड है, एनलाइटेंड है, उन्होंने अपने सारे डिजायर्स को और बेसिक जो ह्यूमन की फैकल्टीज होती हैं उनसे अगर ऊपर उठ के उन्होंने द रियल ट्रुथ जिसको हम कहते हैं, और द रियल व्हेन यू आर सीइंग द थिंग्स एज इट इज, उनको अगर उन्होंने पा लिया है और समाज के लिए जब वो अपने आप को सेल्फ इमोलेट करते हैं, देन इट्स फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी. तो वहां पे जो है उन्होंने अपने आप को इमोलेट कर लिया और वो बिल्कुल लोटस पोजीशन पे बैठ गए डीप मेडिटेटिव स्टेट में, एंड which also symbolizes the offering to Buddha, and it also imitates the Bodhisattva and protest against oppression of dharmas. जब भी धर्म के खिलाफ बात कही गई है तो उन्होंने ऐसे करके अपना जो है मत जारी किया है. Another example we get is Sri Lanka. In Sri Lanka also, violent ethnic conflict between the Sinhalese majority and Tamil minority took place, which has killed around 65,000 people during that time in Sri Lanka since 1983. In its People Peace Plan, तो जब और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जब इसको गवर्नमेंट नहीं रोक पाई और काफी लोगों की डेथ होने लगी, तब वहां के एक ATR करके हैं, उन्होंने एक सर्वोदय करके एक टर्म निकाला, सर्व उदय, जिसका मतलब है सबका उदय, दैट मीन्स राइज ऑफ एवरीवन. और उन्होंने जो कि बेस्ड है बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ पे, और इनके रिस्पॉन्स में in response to this crisis and without giving up its development work, the engaged Buddhist movement Sarvodaya Shramdan, which was engaged in considerable energy more and more in working for peace, maintaining strict non-violent approach. और AT आर्य रत्ने ने इनको शुरू किया और इनको बेसिक स्कूल लेवल से शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को जोड़ा,
इन्होंने छोटे काम से शुरू करा, चाहे वो स्कूल का रोड बनाना हो, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो, किसी पुअर या किसी की जरूरतमंद की हेल्प करनी हो, किसी का घर बनाना हो, इस छोटे से बेसिक चीज से स्टार्ट किया और आज वो प्रेजेंट वर्ल्ड में एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सर्टेन बुद्धिस्ट फिलोसफी पे उन्होंने एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा कर दिया. He also started Shramdan in 1958. When we talk about Shramdan, it talks about working toward society, helping in ending wars, and started peace initiative. जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लास्ट माइल फॉर पीस 90. And when we talk about we have talked about Tibet, Vietnam, Sri Lanka, Cambodia also come with a same example of violence and killings. खेमेर रूप करके एक एरा था 1975 से 1979 तक, जब कंट्री ने बहुत मास लेवल पे जेनोसाइडल रूल को एक्सपीरियंस करा. उसके वो ऑफिशियली कहा जाता है कि 2 मिलियन डेथ ड्यूरिंग खेमेर रूप व्हेन कंट्री वाज शॉक्ड एंड नियर कोलैप्स from that genocidal rule from 1975 to 1979. It was only Mahaghoshnanda which began a dharma yatra or the peace walk for the love, kindness, and targeted those soldiers which were misled by their leaders. उनसे उन्होंने पीस वॉक करा. अगर कहीं पे फायरिंग या यहाँ पे कहीं पे नो मैंस लैंड होता था, वहां पे मॉन्क्स चले जाते थे अपने मॉन्क्स वाले ड्रेस में, वहां पे जाके वो सरेंडर करते थे. कोई अगर उन्हें उन्हें घर वापसी कराते थे. So this was the relevance of Buddhism in the latest war and peace from the contemporary world. इकोनॉमी पे बहुत बात नहीं की या इकोनॉमी को फोकस नहीं करा, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे करा, जो कि पॉवर्टी इज द ओनली वे. उन्होंने हमेशा वेरी लग्जरियस, उन्होंने हमेशा कहा कि ऑलवेज इफ यू आर अर्निंग 100, अगर आप 100 कमा रहे हैं तो 25 अपने लिए कमाइए, 25 फैमिली के लिए, 25 दान करने के लिए और 25 को फ्यूचर के लिए सेव कीजिए. जो कि आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आज के कोई भी अपने आप को कनेक्ट करके ये फील कर सकता है कि यस, दिस इज वेरी रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड. Whether we talk about applying middle paths to economic issues, promote containment and moderation, promotes good for all, और या फिर anti consumerism हो, जैसी आती है. Buddhist leader derive following economic principle from teachings of Buddha, and they apply those teaching to current economic condition and problem of the world. In applying the middle paths to economic issue, engaged Buddhism conclude that Buddhism is not a friend of poverty, but neither can excessive wealth in the hands of a few be justified. The dominant economic model promotes endless economic growth, but this does not realistic. Therefore, Buddhism promote containment and moderation. Capitalism promotes endless consumption and more. It promotes the more and better, while Buddhists promote good for all. एंटी कंज्यूमरिज्म मूवमेंट भी बहुत सारी चली, जैसे उसमें बहुत फेमस एक है सुलक सिवराज का काजा, जो बहुत ही प्रोमिनेंट थे और वो इंगेज्ड बुद्धिज्म से जुड़े हुए थे. और उन्होंने ऐसे कई आर्टिकल्स या कई ऐसे सेमिनार्स करे जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ है या अर्थ रिसोर्स है, this is one of the main reasons for the imbalance and for the current situation. The teaching of Buddha and the Mahayana also says that the concept of interdependence. When we talk about ecology, concept of interdependence and impermanence, Varsa was ruled by Buddha, Bodhi tree, deep ecology, Thailand ecology monks. ये बहुत सारे examples हैं जो कि ecology या हम current में कह सकते हैं कि now we are facing such an environmental crisis that now every country has its own tribunal form for fighting against the environmental problems. और इसके world level पे भी कई सारे forums हैं. तो बुद्धा ने इसको 26 या 100 पहले कह दिया था कि इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने तभी कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, दैट वी आर
interdependent on each other, so we have to take care of each other. एक संघ जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने एक बहुत फेमस रूल बनाई वर्षावास का, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वर्षावास यानी जब रेनी सीजन आता था 3 मंथ्स का, तो उन्होंने बुद्ध ने कहा कि जो 3 मंथ्स के लिए है मॉन्क्स और नन्स वो बाहर जाना कम कर दें, या फिर वो ऐसे जगह पे रहें जहां पे वो कम से कम एनिमल्स, इंसेक्ट्स या कोई भी बर्ड्स हैं उनको कम से कम डिस्टर्ब कर सके। तो उन्होंने फिर ऐसे रूल्स निकाले जिससे वो जानवर डिस्टर्ब ना हो सके, या अगर वो मॉन्क्स कहीं खाना ढूंढने जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं, तो वो उनके पैरों के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए, या फिर अगर वो बाहर किसी से दान या चैरिटी या फूड भी मांगने जा रहे हैं, तो लोग उनके लिए कोई मीट या ऐसा चीज ना रखे जिनकी वजह से उस टाइम के जो बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स एनिमल्स हैं जो उस टाइम एक मेटिंग फेज में है या प्रजनन करने वाले हैं, तो उनको परेशानी ना हो। तो बुद्ध ने इतना सब कंसिडर करके इकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। या जब भी हम किसी की इनलाइटमेंट की बात करते हैं, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, वेरियस ट्रीज हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हम उस ट्री को हमेशा लेते हैं जिसको साइंटिस्ट आज प्रूव करते हैं कि यस दे आर वेरी मच गुड फॉर हेल्थ एंड दे प्रोवाइड ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 24 आवर्स इन अ डे। ये दिखाता है कि हाउ बुद्धा वाज कनेक्टेड विद डीप इकोलॉजी, और उन्होंने इसका सिर्फ इस पे ज्ञान या टीचिंग्स नहीं दी, इसको डे टू डे लाइफ में खुद को और बुद्धिस्ट मॉन्क या नन्स या लेमैन को इम्प्लीमेंट करा और करवाया। अब इसका रिलेवेंस आज कैसे है ये हम जान सकते हैं थाईलैंड के इकोलॉजी मॉन्क्स के। उनका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लोगों को जागरूक करने का। वो एक सर्टेन डे पे क्या करते हैं, कुछ लोग अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं हाथ में हाथ पकड़ के, और वो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो नेचर से कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल रिवर। और वो क्या करते हैं कि वो किसी भी एक नेचुरल चीज के बारे में सोचते हैं जो कि अभी इंडेंजर्ड है या जो लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिवर, और रिवर के बारे में कई सारे टॉपिक्स पे सोचते हैं। रिवर के व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी, इट्स फियर, व्हाट कैन बी डन, और फिर उसके बारे में सोचते हैं और खुद ही उनको एक दूसरे को बोलते हैं। इसका ये फायदा है कि एक सब कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में लोगों के प्रति जागरूकता जगती है कि हम हमें जो है इन सब चीजों के प्रति भी हमारा ध्यान होना चाहिए, और हमें इन्हें भी फॉर अ बेटर वे ऑफ लाइफ हमें इन्हें भी अपने साथ इनको ध्यान रखना है। और इसका जो नाम है वो है काउंसिल ऑफ ऑल बींग्स, और इसका जो डेफिनेशन वो ये है कि अ रिचुअल इन विच ह्यूमन स्पीक फॉर अदर बींग्स, जो अपने लिए नहीं बोल सकते हम उनके लिए बोलते हैं। और इनका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्री को अराउंड दैट टाइम मेनी ऑफ द कंट्रीज वर एक्सपीरियंसिंग डिफॉरेस्टेशन। तो उन्होंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जैसे हम ऑर्डेन्ड या फिर मॉन्क्स हैं, वैसे ही हम पेड़ को भी मॉन्क का दर्जा देंगे ताकि लोग उसको सैक्रेड माने और काटे ना। और कई मॉन्क्स ने उनको पेड़ों को मॉन्क्स का दर्जा दिया और इस प्रकार से जो है पेड़ों को बचाया। So I think this is one of the examples where we can see that 2600 years ago also the various concepts and people were practical in life in implementing for the saving of ecology or development of environment, and it is happening now also based on the Buddhist philosophy and teaching. जो 4 मेजर लीडर्स हैं जैसे कि आर्नेस्ट नाइस, जॉन सीड्स, जोआना मेसी एंड थिक नैथ, वो जो है वो इनका जो है इकोलॉजी का सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट करंट बुद्धिज्म apart from these countries, we also have to talk about now Myanmar. I know Myanmar, we saw the different ideas of Buddhism, because the Buddhism which started in 6th century ago does not teach that talk about love and kindness and compassion, but we can see example in Myanmar where almost 10,000 Rohingyas have been killed in recent violence. तो नाउ ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है कि क्या जो बुद्धिज्म 6th सेंचुरी में आया था, क्या उन्होंने हमें ऐसा सिखाया, और द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन वर्ल्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और आरंट द मॉन्क्स सपोज्ड टू बी कंपैशनेट, काइंड, लविंग एंड काइंड। सो ये क्वेश्चन हमारे ऊपर ये रहता है कि इतने सारे रेलेवेंस होने के बाद अगर कहीं ऐसा एग्जांपल आता है कंट्री से, तो ये एक सोचने वाली बात है, एंड आई क्रिटिसाइज इट।
And at last, I would like to conclude that key Buddhism also led to the global thinking about spiritual and social activism. Buddhism idea of no self, engaged Buddhism ethics, deeply believe in non-violence. और जो मुझे इसमें सबसे जो मुझे इसने अफेक्ट किया है वो है नो सेल्फ थ्योरी एंड कंपैशन. No self theory is also very much relevant. Instead of talking about I, we should talk about we. With this, I now want to end this talk. Thank you very much. Thank you, Mr. Ravi Pratap. It is really wonderful talk. Again, we'll meet on next Sunday with another talk. Thank you very much.